हेलो एवरीवन। सो अभी अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले सी एस एफ बनता कहाँ पे है और सी एस एफ वेंट्रिकल्स में फ़्लो कैसे होता है। तो सी एस एफ हमको ओरिजिनली वी व्हाट वी हैव आइडिया कि डेली प्रोडक्शन कितना होता है 500 ml टू 600 ml तक के जो है वो डेली प्रोडक्शन ऑफ सी सी एफ होता है, सी एस एफ होता है। तो सी एस एफ अपना दो जगह पे मेनली बनता है। सबसे पहले थर्ड वेंट्रिकल पे जो है वो कोरोइड प्लेक्सेस होते हैं। तो दिस कोरोइड प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड बाय एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी। और फोर्थ वेंट्रिकल में जो होता है वो पाइका एंड आइका जो होते हैं, दे आर दी कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सी एस एफ वाया कोरोइड प्लेक्सेस। तो सबसे पहले कोरोइड प्लेक्सेस जो होता है इन दिस टू पोजिशन प्रोड्यूसेस दी सी एस एफ। ठीक है। सो अब अपन आते हैं कि बेसिकली हाउ सी एस एफ फ्लोट्स। तो दिस इज़ द ब्यूटीफुल इमेज इन द नेटर। अब अपन इस पे सबसे पहले लेट अस अज्यूम मतलब कि दिस इज़ द डायग्राम, जैसे कि दिस इज़ हाउ अ लेटरल वेंट्रिकल looks like, and in this here we have a third ventricle. So what happens, lateral ventricle is connected to the third ventricle via one foramen which is called as foramen of Monro. So this is the foramen of Monro, as you can all see here. Okay, so this is the foramen of Monro. This foramen of Monro is the communication between the lateral ventricle and the third ventricle. Okay. So here you can also see the various choroid plexuses which are present. So they help in production of the CSF. So here above the foramen of Monro we have choroid plexus of lateral ventricle, and then below it, where this is the part, here we have choroid plexus of third ventricle. So choroid plexus of third ventricle is produced matlab pica more than ica, and this is by anterior and posterior choroidal artery. Okay, so now the CSF from the lateral ventricle flows into the comes into the third ventricle via a foramen which is known as foramen of Monro. So after this it enters into the third ventricle. Third ventricle is this structure that you can see is the third ventricle. It passes through a narrow canal, you can say, or another foramen, which foramen is also known as aqueduct of midbrain or aqueduct of Sylvius. After that it enters the fourth ventricle. This is the fourth ventricle that you can see. So remember, in this fourth ventricle we have two types of aperture. ठीक है, two types of foramen you can also say. So the lateral one, this is the lateral one. Here you can see this lateral one will it has two foramens. So it is made up of two foramens. It is the two foramens of Lashka. Foramen of Lashka we say. So lateral aperture of the fourth ventricle pe there is two foramens, two in number, which is known as foramen of Lashka, and then there is a one median foramen which is known as foramen of Megendie. ठीक है. Now what happens, there are two types of two amount of flow, a minor flow and a major flow. So the majority of flows happen through this two, and there's another flow in which the minority of the fluid flows into the central canal of spinal cord. That's all. इतना समझ में आया. Now let's come to the next part. So here what happens, the foramen of Megendie that you can see will drain into the cisterna magna. What is cisterna magna? First of all, this is the cisterna magna area. So basically it's an enlargement of subarachnoid space. So here you can see it is between matlab below the cerebellum, है ना, and then it goes upwards, and here if you see there is cisterna magna over, and then the pontine or prepontine cisterns which drains which connects to the foramen of Lushka. After this two they goes into the subarachnoid spaces. As you can see, this is the subarachnoid spaces they go, and then subarachnoid spaces they entered into subarachnoid space, and then subarachnoid space after arachnoid villi pushes them into the this dural venous sinus, mainly the superior sagittal sinus. So this is the whole pathway.
नाउ अब the most important clinical scenarios that can comes. So the most common duct जिस पे स्टेनोसिस होगा जिसकी वजह से हाइड्रोसेफलस होगा. सो कंजेनाइटल मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजेनाइटल हाइड्रोसेफलस में कंजेनाइटल एक्विडक्टल का जो है वो स्टेनोसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, अगर इस डक्ट का स्टेनोसिस है तो थर्ड वेंट्रिकल का जो है वो डायलिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा. Then there is a Dandy-Walker syndrome. In Dandy-Walker syndrome, there is a cyst present in the posterior cranial fossa, जिसकी वजह से आपका foramen of McGinty and foramen of Lushka ये दोनों जो है वो ब्लॉक हो जाएगा. तो ये ब्लॉक होगा तो इसकी वजह से क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल का डायलेटेशन होगा. ठीक है. देन देयर इज अनदर वन जिसमें कि जो माइनर अमाउंट ऑफ CSF है जो कि सेंट्रल कैनाल स्पाइनल में जाता है, उसका ऑब्स्ट्रक्शन तो फॉन सिंड्रोम कैन ऑल्सो टेक प्लेस. अब वी हैव टॉक्ड अबाउट लॉट ऑफ सिस्टर्न्स. व्हाट आर सिस्टर्न? लेट अस जस्ट गेट अ ब्रीफ आइडिया. तो सिस्टर्न्स क्या होते हैं ना, ये बेसिकली सब एरेक्नोइड स्पेस जो होता है उसमें थोड़ी ज़्यादा एनलार्जमेंट हो गई. एक तो जो ये रूट हो गया सब एरेक्नोइड स्पेसिस का, ये नॉर्मल रूट हो गया, ये नॉर्मल रूट हो गया, पर यहाँ पे देख रहे हो कुछ ज़्यादा एनलार्ज्ड है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा एनलार्ज्ड है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा एनलार्ज्ड है. तो इसको अपन बोलते हैं, इसका एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि दिस वन क्वाड्रिजेमाइनल सिस्टर्ना जो कि जो है ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन के इधर पे खुलती है, दिस पार्ट. ठीक है. और फिर देन देयर इज द सिस्टर्ना मैग्ना जो कि अपन ने पढ़ा था, सिस्टर्ना मैग्ना, दिस इज द सिस्टर्ना मैग्ना. यहाँ पे जो है वो क्लोज एसोसिएशन होता है वर्टिब्रल आर्टरी का, पाइका का, 9, 10, 11, 12 क्रेनियल नर्व का. देन देयर इज द प्रीपोंटाइन सिस्टर्ना, दिस इज द प्रीपोंटाइन सिस्टर्ना, प्रीपोंटाइन सिस्टर्ना. यहाँ पे जो है वो बेसिलर आर्टरी जो है वो पास में होगी. देन इंटरपेडंकुलर सिस्टर्न, दिस इज द इंटरपेडंकुलर सिस्टर्न जहाँ पे सर्कल ऑफ विलिस प्रेजेंट होगा. दैट्स ऑल.